bell to get the nimble updates for latest videos. Hello students, welcome to IBPS Guide YouTube channel. Today we will discuss sentence rearrangement and fill-ups. Sentence rearrangement means para-jumble. And in generally para-jumble में हमें क्या होते हैं 4-5 sentences हमें मिलेगा. Maybe sometimes we get 6 sentences also, and these 6 sentences will be not in proper order. We have to make it in proper order and make a पैराग्राफ. सो सेंटेंस को हमें अरेंज करनी है. अरेंज करने के बाद इसका एक पैराग्राफ बनानी है. तो इट विल बी मीनिंगफुल पैराग्राफ ऑल्सो. So let's move to the question number 1, and our first slide is here. Rearrange the following question to form the meaningful paragraph in order to answer the question given below. The sentence given in bold is fixed and no need to consider it while arranging the remaining sentences. That means this is the sentence, the first sentence that is bold, and it is in fixed. Matlab that is the first sentence. It will be the first sentence, and then we have to rearrange the other sentences also. I mean to say first sentence is here given. First sentence यहाँ पे given ही है, और हमें इसको क्या करना है, जो second third करके हमें इसको सजाना होगा. मतलब इसको हमें consider नहीं करना, इसको consider छोड़ के बाकी जो sentences है उसको हमें देना है. मतलब this is the first sentence. So this is the fixed sentence. So हमारे जो the question is here, which will be the following will be the first sentence after rearrangement. So whenever we make the first sentence, it will be not the first sentence because this is already fixed. समझ में आया? मतलब क्या है, जो ये जो सेंटेंस है ना, ये ऑलरेडी फिक्स्ड है, इसको हमने फर्स्ट नहीं मानेंगे. दैट इज आवर इंट्रोडक्शन, वॉट एवर मे बी. अभी बाकी जो बी सी डी एंड एफ ई एफ में है, इनमें से हमें फर्स्ट सेंटेंस को लोकेट करनी है. दैट्स मीन जो फर्स्ट सेंटेंस होगा वो इसके साथ रिलेटेड होना चाहिए, बिकॉज दिस सेंटेंस इज फिक्स्ड एंड इट इज राइटिंग इन बोल्ड. Chalo, let's try to understand the meaning at first. The Caribbean Sea of Utila in Honduras has found a solution to prevent thousands of tons of plastics from going into the Atlantic, turn them into asphalt. Dolphins can now dance freely in Utila's turquoise waters without fearing that plastic will end up their stomachs. The Caribbean city of Utila in Honduras. Honduras is a place of name of place, एक जगह का नाम है. एंड वेयर द कैरिबियन सिटी ऑफ यूटिला, कैरिबियन सिटी, यूटिला एक कैरिबियन सिटी है जहाँ पे हैज फाउंड अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम गोइंग इनटू अटलांटिक. जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है, जो अटलांटिक में जा रहा है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर कंटामिनेटेड हो रहा है. तो इस चीज को प्रिवेंट कैसे किया जाए, दे हैज फाउंड अ सोल्यूशन एंड दिस टर्न देम into asphalt. Dolphins can now dance freely. तो ये लोग सोचा क्या, जो ये जो है ना thousands tons को जो है, इसको अगर turn into them asphalt में अगर turn कर दिया जाए, जिससे रोड बनाया जा सकता है. So then dolphin can now dance freely in Utila's turquoise water. तो dolphin freely dance कर सकते हैं Utila's turquoise water, मतलब ocean blue जो है, blue waters में, without fearing the plastic will end up their stomach. बिल्कुल इनका डर नहीं रहेगा, जो इसका प्लास्टिक जो है इसका स्टमक को खराब कर सकता है. तो स्टमक के कोई डर ना होकर डॉल्फिन्स विल बी इजीली डांस एंड डॉल्फिन विल बी फ्रीली डांसिंग. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज इंट्रोडक्शन. हमारा क्या है ना, यूटिला कैरिबियन सिटी जो हॉन्डुरस पे है, ये लोग एक सोल्यूशन को फाइंड किया. क्या सोल्यूशन फाइंड किया ना, प्रिवेंट थाउजेंड्स ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम गोइंग इनटू अटलांटिक. जो अटलांटिक में जो 1000 प्लास्टिक जा रहा है, इसको प्रिवेंट करना. कैसे प्रिवेंट करेंगे, टर्न देम इनटू एसफाल्ट. एसफाल्ट में इसको कन्वर्ट कर देना, ताकि डॉल्फिन जो है वो फ्री रहे और डॉल्फिन अपना ब्लू ओशनिक वाटर में अच्छी तरीके से डांस कर पाए. So this is our first sentence, and we have to choose the which will be the first sentence. Means this is the fixed sentence. After that we have to choose which will be the first sentence. My dear students, one thing just you have to remember, in the fixed sentence there is two information. First information is Honduras has found the solution to thousands of tons of plastic from going into Atlantic, turn them into asphalt. That is our first information. And second information, dolphin can now dance freely. That is second information क्या है, जो डॉल्फिन
इजिली डांस कर सकती है, करेगा। तो इन दोनों इंफॉर्मेशन में देखो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, विच इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली ये है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हैज फाउंड अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट 1000 ऑफ टन्स ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम गोइंग इनटू अटलांटिक। सो सेकेंड जो सेंटेंस, आई मीन टू से इसके साथ इसके कंटिन्यूएशन पे जो सेंटेंस आएगा वो किसको हाईलाइट करेगा? हाईलाइट तो इसको ही करेगा ना, जो सोल्यूशन जो फाइंड हुआ है वो कैसे हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ टन ऑफ प्लास्टिक जो है वो किस तरीके से एसफॉल्ट में कन्वर्ट होगा, इसके साथ रिलेटेड होगा। बिकॉज डॉल्फिन इज योर सेकेंडरी क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है इसमें? how it can be turned into asphalt. So this is the fixed sentence. So इसके साथ related करके हमें first sentence को locate करना है। बी सेंटेंस पढ़ के देखो, द म्यूनिसिपैलिटी इनोवेटिव सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक बॉटल एंड सीमेंट एंड एम्स टू स्टॉप द एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट थ्रेटन्स नॉट ओनली इम्प्रेसिव डॉल्फिन सेंचुरी बट ऑल द मेरीन स्पीशीज करेंटली लिविंग इन सेकेंड लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड. The municipality's innovation solution is a mixture of plastic bottles and cement. May be correct because how to make it asphalt? We can like that. लिख तो सकते हैं जो प्लास्टिक बॉटल्स एंड सीमेंट, बट कंफर्म नहीं होना, मतलब इसको फिक्स नहीं करना। आगे एक बार बढ़ के देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है कि अबाउट 5 million plastic bottles arrive at the island each year in addition to what the sea brings to the beaches, explained Utila's mayor Troy Borden. So we decided to get rid of plastic by shredding it and using it as a material for the concrete mix to pave our street. मीनिंग समझ में आया? अबाउट 5 million प्लास्टिक बॉटल्स अराइव एट द आइलैंड ईच ईयर। जो 5 million प्लास्टिक बॉटल्स इस आइलैंड पे आती है हर साल में। इन एडिशन टू व्हाट द सी ब्रिंग्स टू द बीचेस, क्योंकि सब मतलब ओशन से ओशनिक वाटर ब्रिंग्स लेकर आती है कहाँ पे? बीच पे। ये एक्सप्लेन किया। हु एक्सप्लेन दिस? यूटिलाज मेयर एक्सप्लेन दिस। द नेम ऑफ यूटिलाज मेयर इज ट्रॉय बॉर्डन. सो वी डिसाइडेड, देयरफॉर ही कंटिन्यूड दैट, सो वी डिसाइडेड टू गेट रीड ऑफ दिस प्लास्टिक बाय श्रेडिंग इट। जो इस प्लास्टिक से बचने के लिए हमने क्या करेंगे? इसको श्रेड करेंगे एंड यूजिंग इट एज अ मटेरियल फॉर कॉन्क्रीट मिक्स टू पेव आवर स्ट्रीट। और इसको हम कॉन्क्रीट के साथ मिक्स करके हमारा स्ट्रीट बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा, डी ऑप्शन है क्या? डी सेंटेंस, इंस्पायर्ड बाय द आइडिया दैट वाज फर्स्ट अप्लाइड इन इंडिया, यूटिलाइज प्लास्टिक रोड्स आर मोर सस्टेनेबल, ड्यूरेबल, चीपर एंड देन कन्वेंशनल रोड, and it was India's example. It was the Indian example coupled with the tourists video Canada's plastic roads and inspired by Mayor Borden. Fifth option, fifth sentence, the islands authority are now using raw material to pave Utila's street, keeping the cetaceans means dolphin, that is aquatic animals को cetaceans कहते हैं, whose dance attract 2.3 million tourists each year safe from plastic invasion. And last sentence, the more than 5 million plastic bottles that each year make their way to the Honduran island in the Caribbean department of Isla de la Bahia and will no longer finish in the ocean. So just if the Caribbean city of Utila is the first fixed sentence, which can be the continuation of the sentence? Definitely देखो my dear students, that will be the fifth sentence, F sentence, because here we take thousands of tons of plastic from going into Atlantic, and F sentence, the more than 5 million plastic bottles that each year make their way to Honduran island. So this is Honduras, and second जो sentence है that is Honduran island. The continuation of word is Honduran island in the Caribbean department of Caribbean department of Isla de la Bahia and will no longer finish in the ocean. So it is clear to us Honduras and Honduran island. Continuation of the sentence will be F. So therefore F जो है यही हमारा होगा क्या? First sentence. So हमारा answer, which of the following will be the first sentence after rearrangement? That will be option B, because F will be the first sentence. After that, which will be the second following will be the second sentence. Second sentence क्या है? देखो अब देखते हैं। देखो हॉन्डुरन आइलैंड जो है इन कैरिबियन डिपार्टमेंट। सो अब इसके बाद कौन सी ऑप्शन हमारे पास आ सकता है? जो हॉन्डुरन आइलैंड में कैरिबियन डिपार्टमेंट ऑफ इस्ला डे ला बाहिया वी नो लॉन्गर फिनिश इन द ओशन। जब भी हम इसको बोलेंगे सो इसके साथ हमें क्या करना चाहिए? कौन सी ऑप्शन हमें देना पड़ेगा जो इसके साथ मैच होगा? Which will be the second sentence? देखो
क्या कर रही है ये जो हॉन्डुरन आइलैंड जो है कैरिबियन डिपार्टमेंट, सो ये लोग कर क्या रहे हैं? द आइलैंड्स अथॉरिटीज आर नाउ यूज रॉ मटेरियल टू पेव यूटिलाइज स्ट्रीट, keeping the citizens whose dance attracts 2.3 million tourists each year safe from the plastic invasion. So islands authority अब ये raw material के हिसाब से यूज कर रही है, यूज कर रहे raw material to pave utilized street and keeping the citizens whose dance attract 2.3 million tourists each year safe from the plastic invasion. मतलब that's mean Honduran Island Caribbean Department, Department of Isla de la Bahia will no longer finish ocean, and they authorities क्या कह रहे? They using this raw material. So that's mean E will be our second sentence. This will be our second sentence. So option will be our C. So first sentence that is F और second sentence हो गया हमारा E. Let's move to next slide. And our next question is third, which can be the third sentence. Third sentence कौन सा हो सकता है? तो अगर देखो इसको हमने this will be our first sentence. It is already fixed. This is fixed sentence. A जो है that is the fixed sentence. तो इसको तो हमने कुछ नहीं करना because it is a fixed sentence. So इसको हमने 1 किया and this sentence will be 2. तो प्लास्टिक इन्वेशन से बचने के लिए अब हम म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशंस म्यूनिसिपैलिटीज क्या किया? म्यूनिसिपैलिटीज इनोवेटिव सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड सीमेंट. सो सेफ फ्रॉम प्लास्टिक इन्वेशन, इसलिए वो लोग क्या किया ना, इनोवेटिव सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स एंड सीमेंट एंड एम्स टू स्टॉप द एनवायरमेंटल पोल्यूशन दैट थ्रेटन नॉट ओनली इम्प्रेसिव डॉल्फिन सेंचुरी बट ऑल द मैरीन स्पीशीज करेंटली लिविंग इन द सेकेंड लार्जेस्ट रीफ इन द वर्ल्ड. सो म्यूनिसिपैलिटी क्या किया? इनोवेटिव सोल्यूशन निकाला. क्या किया ना, प्लास्टिक बॉटल्स के साथ मिक्सचर करके सीमेंट के साथ, और टारगेट किया क्या, जो हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन को हमें स्टॉप करना है और जिसकी वजह से थ्रेट हो रहा है नॉट ओनली द इम्प्रेसिव डॉल्फिन ही नहीं बाकी सारी एक्वाटिक एनिमल. सो दैट्स मीन बी विल बी आवर थर्ड सेंटेंस. सो आवर आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया विच विल बी द फोर्थ सेंटेंस, विच कैन बी द फोर्थ सेंटेंस. तो 3 अगर म्यूनिसिपैलिटी इनोवेटिव सोल्यूशन हो गया, सो विच कैन बी द फोर्थ सेंटेंस. अब देखो फोर्थ सेंटेंस हम कौन सा दे सकते हैं? अबाउट 5 million प्लास्टिक बॉटल अराइव आइलैंड दिस ईयर. I hope it is clear to you. जो about 5 million plastic bottles arrive at the island each year, and in addition to what the sea brings to the beaches, explained Utilitas Mayor Troy Borden. So we decided to get rid of this plastic. हमने decide क्या किया, इस plastic को shred करते हैं, shredding it by using it as a raw material to the concrete mix of our pave our street. So that's mean fourth sentence will be C. That will be the fourth sentence. So fourth sentence will be C, means option will be A. Okay. Then sentence देखो, fourth sentence. And then we can take that inspired by an idea that is the first applied in India, utilized plastic roads are more sustainable, durable, cheaper than conventional roads, and it was Indian examples coupled with the tourist video of Canada's plastic roads that inspired Mayor Borden. My dear students, one thing देखो, अगर हमने इसको भी हम fourth sentence करें, तो then A can be the fifth sentence, number 5. So just like that, third sentence अगर हमारा ये है second largest reef in the world, so then inspired by, definitely inspired by an idea that was the first applied in India, utilized plastic roads are more sustainable, durable, cheaper than conventional road, and it was India's example coupled in the tourist video Canada's plastic. तो ये fourth होगा, D option होगा हमारा fourth. D answer, that is E, sorry. A will be not the answer, and last word will be last answer होगा, last word होगा क्या, C. So fifth होगा हमारा C sentence. So अगर next slide में चलते हैं, that is the last sentence. So about 5 million plastic bottles arrive at the island and each year. So therefore our last जो sentence है, that will be the C sentence. That will be answer will be A. So that's mean first जो sentence है that will be fixed sentence. If ये हमारा first sentence हुआ, E, that is our second sentence. Then the municipality's innovative solution, definitely that will be the third sentence. And then inspired वो कहाँ से हुआ था, इंडिया से, fourth.
or this will be the last sentence. So these are the order of our sentence. इस जगह में confused नहीं होना, क्योंकि पहले inspired हुए थे, उसके बाद उन्होंने बताए थे. At first we have to be inspired and then we can disclose from which we take this idea. So these are 5 sentences which can be rearranged, and इनमें one sentence जो है that is already bold and it is a fixed. Let's move to next slide. Our next slide is 6 to 10. In the passage given below, there are the blanks with the numbers, and find out the words in each is which replaces the number to make the sentence grammatically and contextually correct, and mark the word as your answer. That's mean this is the fill in the blanks. This fill in the blanks, इसमें कुछ gaps है. Gaps के लिए हमारे पास options भी है. We have to put the correct word, and if you think that no words will be correct, so our answer will be none of this. चलो एक बार पढ़ते हैं. अच्छा, इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए एट फर्स्ट वी हैव टू लर्न थ्रू, यू हैव टू गो थ्रू द टोटल पैराग्राफ की मीनिंग पहले हमें समझ आना चाहिए, देन वी डू द ऑप्शंस. अदरवाइज सेंटेंस एक सेंटेंस पढ़ के अगर हम करने की कोशिश करें तो रॉन्ग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है. India cut its trade dash with China by the most in more than a decade, according to people familiar with the data, as it boosted export amid at the US-China trade war. India's export to China jumped 31% year on year to $17 billion in the financial year ended March 31. The people said, asking not to be dash as the data is not public yet. India cut its trade dash with China. First option, deficit, forensic, detail, investigation, none of this. Which can be the correct option? India cut its trade. India ने cut किया trade किसके साथ? China के साथ, with China by the most is more than a decade. By the most in more than a decade, according to people familiar with the data, as it boosted exports amid a US-China trade war. So India cut its trade. Trade अगर cut करे तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो सकता है? देखो, फर्स्ट ऑप्शन डिफिजिट है. डिफिजिट मतलब है क्या? अमाउंट ऑफ विच सम फॉल्स शॉर्ट ऑफ सम रेफरेंस अमाउंट. डिफिजिट का मीनिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, जो अमाउंट of which a sum falls short of some reference amount. Short of some reference amount. So forensic, detail and investigation, these are absolutely incorrect word, because India cut its trade dash with China. So therefore our answer will be deficit. Amount of which the sum falls in the short time, जो sum जो है वो fall किया, तो इंडिया ने क्या किया? cut किया. So cut its trade deficit with China by the most in more than decade, according to people familiar with the data, as it boosted exports amid a US-China trade war. India's export to China jumped 31% year on year and $17 billion in the financial year ended March 31. The people said, asking not to be. Second option we get reported, identified, assist, confirmed and none of these. Definitely इसमें कौन सी ऑप्शन हो सकता है? Asking not to be identified. Identified as the data is not publicly yet. In the process, it cut the bilateral trade deficit by $10 million to $53 million. The surge in export was mainly due to greater demand of marine products, grapes, raw cotton, plastic raw material, items that were. 8 option, number 8 में unidentified fishing, casualties and testing. Which can be the correct option? देखो, unidentified मतलब जिसको हमने identify नहीं कर पाए. Fishing, casualties मतलब होता है कि a person or thing badly affected by any event.
casualty and testing तो जानती हो टेस्ट करना. So if it is unidentified, the items were unidentified, definitely it will be not applicable because it is not unidentified. President Donald Trump trade war in Beijing. So इसको क्या option हो सकता है? Casualties. Casualties मतलब होता है क्या? A person or thing which who badly affected by an event or situation. So therefore our answer will be casualties. Answer will be C. Let's move to next word, next question, that is the ninth paragraph में ninth gap में देखो. अच्छा, अजय सहाय, Director General and the CEO of Federation of Indian Export Organization, said by phone, China has agreed to give increased market access as it sees India filling in gap left by UN. New Delhi has also used the opportunity to push for greater. Option we get dealing, questions, attempts, cooperation. So definitely greater cooperation with China on trade, not dealing, तो cooperation. Next word हो गया हमारा cooperation. Cooperation with China on trade using talks for Beijing-backed 16-nation regional comprehensive economic partnership or RCEP as a lever. Last year, India won market access for sugar, rice, pharma, grapes, fish oil, rapeseed mill and tobacco. It is now working to export soybean meal, pomegranates, banana, pineapple, okra, corn among the other items, and the result have been encouraging, monitoring, alertness and potential. Which can be the correct option? The result have been, क्या हम दे सकते हैं? डेफिनेटली एनकरेजिंग, बिकॉज इसमें देखो ऑलरेडी वर्क जो हो रहा है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, सोयाबीन हो रहा है, पोमेग्रेनेट्स हो रहा है, बनाना हो रहा है, तो डेफिनेटली रिजल्ट तो एनकरेजिंग है ही है. हैज बीन encouraging. Export of marine products for China witnessed 346% jump in April-February period, grapes by 200% and raw cotton 226% and plastic raw material. That's mean everything is an encouraging manner पे बढ़ रहा है, enhancing acceleration manner पे है. So that's why it will be encouraging. So these are the 5 questions, 5 words which will be fit in this in this gap, and this is called close gap. Dear students, this type of paragraph really it is not so easy and it is very much confusing because there is a lot of data, lot of information, lot of words also. Sometimes ना हमें ये इसको पढ़ने का भी मन नहीं करता है, जो लगता है जो इसको इतना पढ़ के किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. तो दैट्स वाई तुम्हें हर पैराग्राफ की जब भी तुमने सॉल्व करोगे गैप्स का 2-3 लाइन तो जरूर पढ़ो. अदरवाइज एक आइडिया होगा जो सेंटेंस जो है वेदर इट इज नेगेटिव, ये नेगेटिव में जाएगा या पॉजिटिव में जाएगा. इफ इट इज अ नेगेटिव देन वी हैव टू टेक नेगेटिव वर्ड, एंड इफ इट इज एन पॉजिटिव we have to take the positive word. And most important thing, verb and grammar will be also followed here. The result have been, whenever we take सकते, see that have been मतलब that is present perfect continuous tense. So perfect continuous tense मतलब ये verb की ing form. So either encouraging और मॉनिटरिंग, अलर्टनेस, पोटेंशियल, ये दोनों जो है वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा. इस तरीके से भी हम इसको ना ऑप्शंस को एलिमिनेशन कर सकते हैं, एलिमिनेट छोटा कर सकते हैं. आप देखो मॉनिटर करने का मतलब तो मतलब लुक आफ्टर करना, इज नॉट द, सो दैट्स व्हाई एनकरेजिंग. सो हैव बीन एनकरेजिंग होना ही चाहिए बिकॉज दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. सो इस तरीके से ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर करके छोटा करके इससे हम आंसर को लोकेट कर सकते हैं. सो इसको एक बार जरूर ट्राई करना. इसमें बोला क्या है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पैराग्राफ एंड व्हाट इज द मेन एसेंस ऑफ दिस पैराग्राफ. मेन एसेंस तो डेफिनेटली चाइना इंडिया चाइना बिजनेस ट्रेड जो है इसके बारे में इसमें बोला गया है. बट इसमें देर इज अ लॉट ऑफ डेटा एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ नेम्स ऑल्सो, लॉट ऑफ नेम ऑफ डायरेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वेन एवर वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अ वेरी crucial to choose the correct word. So don't be panicky. Try to solve the question step by step. First sentence पढ़ो, फिर fill करो. Second sentence पढ़ो, फिर fill करो. Then it will be easy for you. So I hope you understand my what I want to say to you. जस्ट इसको ना, इसके लिए हमें चाहिए वी नीड अ प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस. जितनी हमें ऑप्शंस मिले सारी ऑप्शंस को हमें करना चाहिए, देन इट विल बी वेरी इजी एंड इट विल बी कप ऑफ टी.
So my dear students, keep it practice, and tomorrow again I will come and bring some different type of 10 question for SBI PO examination. Till then, goodbye, have a nice day.